Good morning, my dear children. Hope you all are safe at home. Very busy with your studies. Hmm? I hope you all are completing the notes which we are giving you. Today, we are moving to our history topic, chapter 4, National Movements in India. In 8th standard, I taught you about the different nationalistic movement in our country. I want you to remember our previous topics. British coming to India, and after that British is conquering us, and finally after 200 years of rule they are going out of our country. I hope you remember one thing. I told you I have made a chart and I showed you rule of British in India first 100 years. That period we completed, that first 100 years, and the end of the first 100 years we completed with the first war of independence. After that, what happened? These are the points which we are going to discuss today. Page number 23 of your textbook, chapter 4, National Movements in India. During their stay in India, Britishers became familiar with the political conditions of India. You remember in 1600 AD, the British East India Company established in India. Later, they started their first colony or first rule in Bengal, Bihar and Orissa. 1857 AD, the revolt of 1857 is happening, the first war of independence. We call that the revolt of 1857 as the first war of independence, or it was the first great national uprising of Indians against the Britishers. During that time, many leaders or many revolutionaries like Tandya Topi, Raja Kushwant Singh, Rani Lakshmi Bai, Bahadur Shah Zafar, they all were part of this first revolt of 1857. The British East India Company took advantage of the political situations. During that time, we studied last year, during that time, India was ruled by several or different rulers. They were in a fight to expand their territories. During that time, they were not able to keep up the unity of the land, because they were concentrated in developing or extending their territories. So British understood this situation and they started exploiting us. The political, please come to page number 23, second paragraph, first line. The factors that caused the uprising of 1857 were political dissatisfaction, economic exploitation, social and religious factors, military factor, and the immediate reason, that was the introduction of Enfield rifle in the army. You remember about Mangal Pandey, the first martyr of the revolt of 1857. He was the one who fought against the British when they introduced the Enfield rifle. And during that time, we were having lots of leaders that we have discussed. Now, coming to the same paragraph, as you know, the first war of independence was a failure. The reasons for the failure also we have studied in the previous section.
Why the reason was it was a failure, that also here. In order to maintain the supremacy over India, the English gradually developed a strong administrative structure in the country with their own rules. इंडियन रूल्स कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया, वो उनका रूल हमारा ऊपर डाला, और हमारा पैसा, हमारा रिसोर्सेस, हमारा मटेरियल्स यूज़ करके वो लोग खुद प्रॉस्पेरिटी, दे अटेन्ड देयर प्रॉस्पेरिटी बाय यूजिंग आवर मनी, आवर रिसोर्सेस, आवर materials, and they exploited the country most. Is giving you a small introduction about that reasons for the revolt of 1857. Already we have discussed. See the time period, 1600 AD say 1857, that 100 years, almost 100 years. 100 years ब्रिटिशर्स रूल करने के बाद हमें पता चला कि हम इनका अगेंस्ट जाना है. सो हमारा फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857. What were the reasons for revolt of 1857? That is explained already, we have discussed. The reasons for the failure of the revolt that we have studied last year in 8th standard, but was a small answer also. बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग बिफोर द प्लान्ड टाइम, जो शेड्यूल किया वो टाइम के पहले वो लोग रिवोल्ट शुरू किया था. लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, कोई भी एक लीडर नहीं था, रियल सेंट्रल लीडर नहीं था. इनसफिशिएंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स, हमारा वेपन सब पुराना ज़माना का था, और ब्रिटिशर्स वर हैविंग हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स. इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट दैन नेशनलिज्म, कोई भी एक लीडर को पूरा इंडिया का फ्रीडम के बारे में कोई नहीं सोचा था, सब लोग अपना अपना टेरिटरी के बारे में सोचा था. लैक ऑफ सूटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप, दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. इफेक्ट्स ऑन ब्रिटिश, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के वजह से ब्रिटिशर्स को क्या पता चला? ब्रिटिशर्स अंडरस्टूड दैट इंडियंस इतना ईजीली हमारा हाथ में रखना है तो क्या क्या ट्रिक्स अप्लाई करना है, वो ब्रिटिशर्स को क्या, व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स. द अपराइजिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट प्रोड्यूस्ड मेनी इफेक्ट्स अमंग द ब्रिटिशर्स. फर्स्ट वन, that is end of the company rule in India. Britishers stopped English East India Company, and the rule is now coming under the directly ruling under the British Crown, that is Queen Elizabeth Victoria, 1857 Queen Victoria का rule के directly under the control of Queen Victoria. Then Britishers, they started making many changes in the administration, military, social, religious policies in India. Now the main topic which we are going to discuss is about the boycott and indigenous movement. This also we have discussed in standard 8. The indigenous movement, indigenous means belonged to a particular group. Boycott movement and indigenous movement, these were the two important things you are supposed to study in this section. Along with the Bang Bang movement. Bang Bang movement is otherwise known as Division of Bengal of 1905, was one of the most important events of Indian national movements. Britishers introduced the policy divide and rule, because Britishers को पता चला कि ये लोग इकट्ठा हो गया तो इंडियंस दे आर हैविंग यूनिटी, तो इनका यूनिटी तोड़ना है, तो इधर क्या डालना है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. बिकॉज हमारा आवर कंट्री वॉज द लैंड ऑफ रिलीजियन, तो रिलीजन के ऊपर इनके अंदर कुछ डालो तो ऑटोमेटिकली ये लोग रिलीजन के ऊपर झगड़ा करेगा, तब इनका ब्रदरहुड सब भूल जाएगा. विथ दैट इंटेंशन ब्रिटिश इज नाउ planning to divide the country. Now the first thing they done here is division of Bengal. Page number 23, boycott and indigenous movement, second paragraph. It is discussing about the division of Bengal. If possible, write with a red pen or color sketch pen, write division of Bengal. Okay, Bengal was the biggest province of British during that time. In the next section, I have given a photo, a map of Bengal of that time, during that time. That is present day West Bengal और बांग्लादेश का थोड़ा पोर्शंस वो टाइम पे बंगाल रीजन में था, और उधर मुस्लिम्स का पॉपुलेशन और हिंदूज का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल था.
Though what the Britishers they had done during that time, well as Viceroy Curzon was the Viceroy of that time. तो उनको पता चला कि इधर क्या करना है, पहले इनके बीच में हाँ हिंदू मुस्लिम ऐसा सेपरेशन लेके आना है. बिकॉज वो टाइम पे बंगाल वॉज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेशनल अवेकनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. 1857 रिवोल्ट में बंगाल वॉज द सेंट्रल पॉइंट. पूरा नेशनलिस्टिक फीलिंग, मेरा भारत महान, ऐसा फीलिंग कौन लेके आया था? बंगाल में से आया था. तो ये बीज कहाँ डालना है? बंगाल में डालना है. सो इन द ईयर 1857 Britishers they put, especially Lord Viceroy Curzon, he was planning to divide Bengal. They divided Bengal into East Bengal and West Bengal, and they East Bengal and West Bengal. So East Bengal Hindus were there and East Bengal, yes, Hindus were there, and West Bengal majority Muslims were there. Okay, that was the plan made by whom? Viceroy Curzon. Whether the people of Bengal was supporting this decision for dividing Bengal into East Bengal and West Bengal? No, there was a strong opposition to the division of Bengal. हमारा परमिशन उनको नहीं चाहिए था, वो डिवाइड किया. प्लीज अंडरलाइन, Bengal was divided on 16th October 1905. 1905 16th October को बंगाल को वाइसरॉय कर्सन डिवाइड किया into East and West Bengal. And that day Bengal observed as a national mourning day. अंडरलाइन, नेशनल मॉर्निंग डे. गुड मॉर्निंग नहीं है, स्पेलिंग देखो, दुख का दिन है. पूरा देश में दुख का दिन, अनिशोचन का दिन सेलिब्रेट किया. द सेम डे एन अनाउंसमेंट about, please underline, boycotting all foreign goods and encouragement to use indigenous goods. देशी आइटम्स यूज़ करना है और फॉरेन आइटम्स छोड़ना है. हम लोग अभी चाइनीज़ आइटम्स ना बोल रहे ना, जैसा ही तब फॉरेन आइटम्स हमें नहीं चाहिए और हम क्या यूज़ करेंगे? इंडियन आइटम्स, देशी आइटम्स. So this was the decision made during that time. The leaders announced the boycotting of all foreign goods and encouraged to use indigenous, that is Swadeshi goods. ये स्वदेशी मूवमेंट एक बार इंट्रोड्यूस किया तो क्या हुआ? What happened? Please come to page number 23, last paragraph, first line. India benefited a lot because of स्वदेशी मूवमेंट. प्लीज अंडरलाइन, इंडिया बेनिफिट. इंडिया को क्या क्या बेनिफिट मिला? हमारा इधर नमक से लेके पूरा सामान ब्रिटिश का था. ब्रिटिशर्स वर नॉट अलाउिंग इंडियंस टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग इन द कंट्री. हम लोग कुछ बनाएगा तो उनको कहाँ पैसा मिलेगा? तो दे वर नॉट अलाउिंग अस टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग इन दिस कंट्री. सो what happened was, when we stopped using foreign items and we started using Swadeshi items, English industry was badly affected. Britishers का पूरा इंडस्ट्री का बहुत ख़राब हो गया. बहुत मीन्स पूरा उनका दुकान में सेल नहीं हो रहे. एवरीथिंग बैडली अफेक्टेड. द क्लोथ्स कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर, लंदन, इंग्लैंड में से जो कपड़ा आ रहे वो बंद हो गया. शुगर नहीं चाहिए हमें ब्रिटिशर्स का, हम लोग जागरी में वापस चला गया. शूज़, इंडियन शूज़ इधर नहीं चाहिए. सिगरेट नहीं है, हमारा बीड़ी है ना, टोबैको etc. imported from England, all reduced their sale. Please underline the next sentence. The sale of cloth made in India increased. Factories for making indigenous goods were started. The effect of the movement was felt in other parts of India. बंगाल में, सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरा इंडिया का अलग अलग प्लेसेस में, लाइक पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी, Madras, Chennai, Mumbai, everywhere this
मूवमेंट स्टार्टेड? हाँ, हमारा यूनिटी इतना बड़ा था वो टाइम पे. The map which I told you, the map of India during that बंगाल, especially बंगाल प्रोविंस है, वो ज़माने में बंगाल प्रोविंस बहुत बड़ा था. हाँ, ब्रिटिशर्स क्या एक्सक्यूज़ बोला था डिवाइड करने के लिए, डिवाइड करने का वो उनका प्लान हमको ऐसा समझा है कि वो बंगाल उनको इतना बड़ा स्टेट है इसलिए उनको रूल करने में डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. But it was not the reason. Okay. The day when Bengal was divided, Indian Hindus and Muslims, they tied Rakhis each other. हम भाई भाई है, भाई बहन है, हम लोग झगड़ा नहीं करेगा. This movement had three major characters. The speciality of this movement is, फर्स्ट थिंग दे अडॉप्टेड इंडाइजिनस प्रोडक्ट्स, स्वदेशी आइटम्स यूज़ करना शुरू किया. सेकेंड थिंग फॉरेन आइटम्स बॉयकॉट किया. थर्ड थिंग नेशनल एजुकेशन, हमारा भाषा में, इंडियन भाषा में हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस इधर उधर स्टार्ट किया. ओके, तो ये सब देखकर ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चला कि इंडियंस के साथ ऐसा करो तो उनको ब्रिटिशर्स को फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए. सो विद इन 6 years, दैट इज़ इन 1911, ब्रिटिश पार्लियामेंट कैंसल्ड द डिविजन ऑफ बंगाल एंड अगेन बंगाल वॉज यूनाइटेड. Now the next topic is the birth of Muslim League. 1905, what happened? 1905 Bengal was divided. फिर थोड़ा सबके मन में इतना यूनिटी नहीं था, वो आप देखना है, हर जगह पे ऐसा ही होता है. नाउ ब्रिटिशर्स को पता चला ये कॉमनली बोलो तो इनको नहीं, एक किसी को पकड़ना है, हमको भी ऐसा ही है ना, जासूसी करने का है. सेम वे व्हाट द ब्रिटिशर्स दे हैड डन, दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू ब्रेक द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन इंडिया. फॉर दैट they started creating internal enmity. अंदर हाँ, internal enmity, they started creating internal enmity so that they will be getting, हम अंदर झगड़ा करेगा तो ब्रिटिशर्स को क्या प्रॉब्लम है, उनको अच्छी तरह रूल कर सकता है. So what they have done was they created internal enmity and rule easily on the divided communities. हमारा यूनिटी तोड़ने के लिए और हमारा नेशनलिस्टिक स्पिरिट कम करने के लिए, ज़ीरो करने के लिए, वो टाइम का वाइसरॉय था लॉर्ड मिंटो. लॉर्ड कर्जन इंडिया बंगाल डिवाइडेड इनटू 2 एंड वो चला गया यहाँ से. 1905 उसका काम ख़त्म हो गया और वो चला गया. उसके बाद 1906 में ब्रिटिश दूसरा वाइसरॉय को भेजा, वो है लॉर्ड मिंटो. लॉर्ड मिंटो इधर आया और उसके साथ हमारा वाजीर ड्यूरिंग दैट टाइम, इंडियन वाजीर दीवान मोरले, इंडियन वाजीर मोरले, they together planned to crush the Indian nationalism. हमारा नेशनलिस्टिक स्पिरिट तोड़ने के लिए एक इंडियन और एक ब्रिटिश वाइसरॉय दोनों में एक प्लान बनाया. और उनका प्लान क्या था, वो मुस्लिम में से थोड़ा लीडर्स को पकड़कर उनको बोला, देखो तुम लोग कांग्रेस, वो टाइम में इंडिया में एक ही पार्टी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कांग्रेस के साथ तुम लोग खड़े हो जाता है ना, तुम लोग को सीट ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो तुम लोग एक काम कर, तुम्हारा खुद का एक पार्टी बनाओ. तो और आप लोग को खुद का पार्टी बनाओ तो क्या होने वाला है, तुम्हारा हर एरिया में तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएगा. अदरवाइज कांग्रेस मिनिस्ट्री में सबको चांस नहीं मिलेगा. ये सुनकर ये जो लीडर्स बनना चाहते थे, लीडर्स जो बनना चाहते थे, वो लोग क्या किया, इनका वर्ड सुनकर वो लोग धीरे धीरे उनका एक खुद का पार्टी बनाया और वो पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग. They formed the Muslim League, the party for Muslims in the year 1906.
The British convinced the Muslims that instead of being a part of Indian political organization, they should form a separate organization for Muslims and demand separate voting rights and voting centers. Okay, the Muslims thus got convinced and they formed their party in the year 1906. Aga Khan, he was the religious head of Muslims during that time, and Salimullah Khan, he was the Nawab of Dhaka, Bengal ka Nawab or Viceroy Mindo, and uska assistant Smith. They played an important role in establishing the formation of Muslim League. Muslim organizations Muslims organized a conference on the same day. एक दिन कांग्रेस लीडर्स ये सब डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग रखा था. उसी दिन मुस्लिम लीग ऑल्सो मेड देयर मीटिंग. तो मेजॉरिटी Muslims, those who were supporting Congress, were not able to attend the meeting. Okay, the meeting made by the Congress. Thus, a separate Muslim organization was made. और वो किसका मन का प्लान था? वाइसरॉय मिंडो. हमारा हिस्ट्री में हम लोग ऐसा बोलता है कि इंडिया पाकिस्तान ये कम्युनल स्पिरिट कौन बनाया? हम लोग बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना. बट रियली आप सोचो, मोहम्मद अली जिन्ना इज नॉट द मैन हु क्रिएटेड दिस evil spirit into the mind of the Muslims in India. It was the master plan of Lord Mindo. So history, the historians are sometimes they are telling the real creator of Pakistan was not Muhammad Ali Jinnah or Rahmatullah, but it is Lord Mindo. Okay. Now, एक बार हमारा कांग्रेस पार्टी में से ऐसा स्प्लिट आ गया, कि ये स्प्लिट हो गया हिंदूस और मुस्लिम का एक पार्टी. तो ये देखकर हमारा मूवमेंट और हमारा लीडर्स को इतना अच्छा भी नहीं लगा कि हमारा पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम जो भी पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे वो इतना शांति से प्यार से मेमोरेंडम फिल करके इससे कुछ नहीं चलेगा. हम कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स यूज़ करना है, इन लोगों के साथ फाइट करना है. तो ऐसा एक सिचुएशन हो रहा है अभी. द बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट. सो दिस टाइप ऑफ एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स वर स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ Vasudev Balwant Phadke, page number 24, under the heading Birth and Development of Extreme Revolutionary Movement. Please underline first line. Under this movement, वासुदेव बलवंत भटके के लीडरशिप में हमारा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है. उसके साथ many other revolutionaries, many people from different states supported this revolutionary movement, like Damodar Chapekar, Balkrishna Chapekar brothers, Veer Savarkar, Badrindranath Ghosh, Khudridam Bose, Prafulla Chakki. They all were the supporters of this extreme revolutionary movement in our country. The British government was facing a threat because of this movement, because इनका थोड़ा violence ज़्यादा था, उनके पास weapons था. तो हमारा youth, they were trained in making and using the weapons. So Britishers, they find it little difficult with the revolutionary movement following in our country. Now, fierce revolutionary movements began in India and spread in other countries as well. In the coming section, you will study. revolutionary movement पहले इंडिया में शुरू हो रहे और इधर से बहुत हमारा अलग अलग स्टेट्स में स्प्रेड हो रहे, यहाँ से बाहर का कंट्रीज़ में जा रहे.
British, yeah, many Indians were working with in other countries during that time. All were supporting the revolutionary movements. And inside the Congress party, you will see a split. In the next section, I will tell you about. It happened in the conference of Surat. Congress, they were having every year, one day, 1 week, they will be having a conference for the leaders. पूरा इंडिया में जो भी लीडर्स है सब एक जगह पे आएगा और उनका एक कॉन्फ्रेंस होता है. So 1907 there was a conference held in Surat and there कांग्रेस के अंदर भी स्प्लिट हो गया. हाँ, सो सम टुक पार्ट इन द रेवोल्यूशनरी साइड एंड सम ऑर्डिनरी जो था वो ग्रुप में ज्वाइन किया. So look into this chart. INC, Indian National Congress Party. In the beginning we were having only one party in India, that was Indian National Congress या Congress Party हम जो बोल रहे हैं. फिर 1906 इंडियन नेशनल कांग्रेस में से थोड़ा मुस्लिम्स अलग होके मुस्लिम लीग बनाया. और आप याद रखना है मुस्लिम लीग फॉर्म किया फिर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारा मुस्लिम लीडर्स वर देयर. नाउ this section which we are telling about the split inside the Congress party. Now see, inside the Congress party in the Surat session happened in the year 1907, the Indian National Congress inside they divide again. दो group बनाया, Jahal and the Mawal. Jahals means the radicals, थोड़ा extreme movements है, revolutionary group है और हम लोग extremist बोलता है. और दूसरा है मावल ग्रुप और द मॉडरेट्स, दैट इज शांति से प्यार से सब कुछ गांधी जी जैसा ही है, मारो तो रेडी टू लिसन, रेडी टू व्हाट ओबे व्हाट एवर दे आर टेलिंग. अहिंसा, देयर रूल्स, देयर पॉलिसी वाज अहिंसा. बट द जहल्स और द रेडिकल्स और द एक्सट्रीमिस्ट, they were not ready to follow the rules and regulations of Indian National Congress. They were known as the extremists. For example, the Lal Bal Pal trio. Have you heard about the Lal Bal Pal trio of Congress party? Congress leaders, Indian National Congress. Lala Lajpat Rai, Bala Gangadhara Tilak and Bipin Chandra Pal. They are known as the Lal Bal Pal trio. Okay. वो कौन सा ग्रुप में आया? रेडिकल ग्रुप में. लाल बाल पाल ट्रायो अडॉप्टेड द रेडिकल एटीट्यूड विच ब्रॉट ए न्यू लाइफ इन द यंग इंडियन एक्टिविस्ट. यंगस्टर्स सब रेडिकल ग्रुप में था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में. वो ब्रिटिशर्स के साथ प्यार से बात करने के लिए यंगस्टर्स रेडी नहीं था. सो दे जॉइंड द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एंड देयर वन ऑफ देयर मेन लीडर्स वर लाल बाल पाल ट्रायो. As we have discussed earlier, these revolutionaries, they were ready to give their life for their motherland. India के लिए उनका पूरा life देने के लिए वो लोग ready था. For example, the Lokmanya Tilak, he told that freedom is my birthright and I will achieve it anyhow. These all things we have discussed in 8th standard. Revolutionary activities spread to other parts of the country like Maharashtra, Bengal, Punjab, Bihar, Orissa, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, everywhere it, and they have formed their own parties also. ये revolutionary groups उनका खुद का सोसाइटी भी बनाया, अलग अलग ग्रुप्स बनाए. फॉर एग्जाम्पल अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, ऐसा अलग अलग ग्रुप्स. इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, बाद में उनको भारत माता नाम दिया था. ऐसा अलग अलग ग्रुप्स वो लोग ने मीन्स पार्टीज दे हैव मेड. Now the revolutionary activities, we are dividing it into two stages. Page number 25, third paragraph, fourth paragraph. We are dividing these activities into two stages, in the first stage and the second stage. In the first stage, the revolutionaries, their activities got concerned encouragement through articles printed in the different newspapers like Yugandhar, Navshakti, Kesari, Maratha, etc. were the newspapers. they में ये लोग ideas लिख के public को देते. They were able to get ideas, revolutionary ideas. The revolutionaries
throw a bomb on British office in Alipur. The British caught 34 revolutionaries involved in this massacre, arrested 34 revolutionaries or massacre, maar dala. Several revolutionaries were arrested. At the same time, you will see many revolutionary activities they made to kill the British officers, especially one Lord Hardinge, उसके ऊपर बॉम्ब डाला था. दूसरा है ड्रॉपिंग ए बॉम्ब आउटसाइड रायपुर दरवाजा इन अहमदाबाद. These are the first stage activities of the revolutionary leaders of our country. In the second stage, it took place between the year of 1920 to 1942. इसका एग्जाम्पल है ककोरी लूट केस. गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बैंक वो लूट किया. लाहौर मजाकर, बहुत सारा ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को मार डाला. ड्रॉपिंग बॉम्ब इन सेंट्रल पार्लियामेंट दिल्ली. दिस वाज द इंसिडेंट वेयर आवर भगत सिंह, in the second stage you will see Bhagat Singh was involved in that. It happened in the year 1929, April 8 को भगत सिंह ने बॉम्ब डाला था और उसके बाद 12 जून को उसको मार डाला था. हैंग्ड टू डेथ, वीर भगत सिंह. ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट्स पूरा इंडिया का अलग अलग जगह पे हुआ था. Thus, overall, the extreme revolutionaries did several activities and played a very active role in shaking the British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए रेवोल्यूशनरीज सच्ची में बोलो एक हेडेक था. सो इन दिस सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू main thing. First thing we discussed about the first war of independence. Second thing we discussed about the division of Bengal, boycott and Swadeshi movement. Then formation of Muslim League in the year 1906 and the birth and development of the revolutionary movement in the country. Now, in the next class, we will discuss about the revolutionary movement in Gujarat as well as in the foreign countries. Okay, so write whatever main points are coming from this section and we will see you in the next class. Till then, stay safe. Thank you. Bye.